নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগ 2 2 নম্বৰ পাঠ ছোটা জাদুঘৰৰ লেখক জয়শঙ্কৰ প্ৰসাদৰ বিষয়ে পঢ়িম। বলা তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। बाबू जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग में हुआ था, जो कि 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक था। आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्रों में अमर लेखनी चलाकर आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्यकार के अलावा आप इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक भी थे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखने वाले प्रसाद जी ने इन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है। साथ ही आपने यांत्रिकता, बुद्धिवादिता और भौतिकता की अतिरेकता से उत्पन्न आधुनिक जीवन की विविध मूलभूत समस्याओं को चिन्हित करके अपने ढंग से उनका समाधान निकालने की भी कोशिश की है। इन महान प्रयासों के कारण आपके साहित्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ইয়াত কৈছে যে বাবু জয়শঙ্কৰ প্ৰসাদৰ জন্ম হৈছিল আধুনিক হিন্দী সাহিত্যৰ ছায়াবাদ যুগত। ছায়াবাদ যুগ 1918 চনৰ পৰা 1938 চনলৈকে আছিল। আপোনাৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ বলত আপুনি কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস ৰচনা আৰু সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত অমৰ লিখনি লিখি আধুনিক কালৰ হিন্দী সাহিত্যক সমৃদ্ধ কৰিছে। আপুনি এজন লেখকৰ উপৰিও ইতিহাস আৰু পুৰাতত্বৰ এজন পণ্ডিত আৰু এজন গুৰুতৰ চিন্তাবিদো আছিল। ভাৰতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধৰ্ম, দৰ্শন, ভক্তি অধ্যয়নৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ থকা প্ৰসাদদেৱে নিজৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে সেইবোৰক উজ্জ্বল কৰি তুলিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে। একে সময়তে আধুনিক জীৱনত ইয়াৰ ব্যৱস্থা, যুক্তিবাদ আৰু বস্তুবাদৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ চিনাক্ত কৰি নিজ নিজ ধৰণে সমাধানৰ চেষ্টাও কৰিছে। এই মহান প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আপোনাৰ সাহিত্যৰ প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লেখক পৰিচয়ত আমি এটা বস্তু দেখা পাইছো যে ইয়াত আপুনি, আপোনাৰ বা আপনে, আপকো এনেকুৱা শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। উত্তৰ লিখা সময়ত তোমালোকে আপুনি বা আপোনাৰ এনেকুৱা শব্দবোৰ নিলিখি जयशंकर प्रसाद जी ने लिखिबा। नेक्स्ट स्टेंजाटলৈ আহিছো। प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित कान्यकुब्जीय वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। पिता देवी प्रसाद और बड़े भाई शंभू रत्न जी के असमय निधन होने के कारण 17 वर्ष की अवस्था में ही पैतृक कारोबार तथा घर परिवार का सारा दायित्व प्रसाद जी को संभालना पड़ा। आपने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, भारतीय इतिहास आदि का अध्ययन भी आपने किया। कलाधर नाम से ब्रजभाषा में कविता लिखने के साथ प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ था, परंतु आपने शीघ्र ही खड़ी बोली को अपनाया और अलग अलग विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। आपके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली प्रौढ़, प्रांजल, कलात्मक एवं संस्कृत निष्ठ रही है। 1937 ईस्वी में आपका देहावसान हुआ। প্ৰসাদজীৰ জন্ম হৈছিল 1889 খ্ৰীষ্টাব্দত কাশীৰ এটা প্ৰতিষ্ঠিত কন্যাকুব্জীয় বৈশ্য পৰিয়ালত। পিতৃ দেৱী প্ৰসাদ আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ শম্ভুৰত্নৰ অকাল মৃত্যুৰ বাবে 17 বছৰ বয়সত প্ৰসাদজীয়ে পূৰ্বপুৰুষৰ ব্যৱসায় আৰু ঘৰৰ সকলো দায়িত্ব ল'বলগীয়া হৈছিল। তেওঁ ঘৰতে সংস্কৃত, উৰ্দু, ইংৰাজী, ফাৰ্চী আৰু হিন্দীৰ পৰ্যাপ্ত জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে আপুনি বেদ, পুৰাণ, উপনিষদ, বৌদ্ধ আৰু জৈন গ্ৰন্থ, ভাৰতীয় ইতিহাস আদিও অধ্যয়ন কৰিছিল। কলাধৰ নামেৰে ব্ৰজভাষাত কবিতা লিখি প্ৰসাদজীৰ সাহিত্যিক জীৱন আৰম্ভ হৈছিল। কিছু সময় পিছত আপুনি খৰিবলী ভাষা গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন ধাৰাত বহু সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা স্থানীয় ভাষা খৰিবলী প্ৰৌঢ়, প্ৰাঞ্জল, কলাত্মক আৰু সংস্কৃতিবান আছিল। আপোনাৰ মৃত্যু হৈছিল 1937 খ্ৰীষ্টাব্দত। नेक्स्ट स्टेंजा। भारतीय संस्कृति के चितेरे प्रसाद जी मूलतः कवि हृदय के थे। अब छायावादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आपकी काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक,
करुणालय महाराणा का महत्व, झरना, आंसू जो कि एक खंड वाक्य है, लहर और कामिनी जो कि महाकाव्य है, उनके द्वारा विरचित नाटक है। सज्जन कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी ने 3 उपन्यासों की भी रचना की है। कंकाल, तितली और इरावती उनके द्वारा विरचित निबंधों का संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ইয়াত কৈছে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ চিত্ৰকাৰ প্ৰসাদজী মূলতঃ কবি হৃদয়ৰ আছিল। তেওঁ ছায়াবাদী কাব্যধাৰাৰ প্ৰতিনিধি কবিৰ ৰূপত বিশিষ্ট হৈছিল। তেওঁৰ কাব্য ৰচনাসমূহ হ'ল উৰ্বশী, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शौकत चवास, बब्रू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू যিখন হৈছে এখন খণ্ডকাব্য, লহৰ और কামায়নী যিখন হৈছে মহাকাব্য। তেখেতে ৰচনা কৰা নাটকসমূহ হৈছে সজ্জন কল্যাণী পৰিণয়, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त আৰু ধ্ৰুৱ স্বামিনী। তেখেতে 3খন উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল, সেইবোৰ হৈছে কংকাল, তিতলি আৰু ইৰাৱতী। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতৰ ৰচনা সংগ্ৰহসমূহ হৈছে কাব্য और कला तथा अन्य निबंध। नेक्स्ट स्टेंजाटলৈ আহিছো। प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियां हिंदी को भेंट की है। ये कहानियां छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि, इंद्रजाल आदि संग्रहों में संकलित है। उनकी प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानीकार के रूप में आप भाववादी धारा के प्रवर्तक कहलाए। आपकी अधिकांश कहानियों में चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मोह से युक्त भावमूलक आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आर्थिक विपन्नता, निरीहता, अन्याय और शोषण को भी कुछ एक कहानियों में चित्रित किया है। सहयोग, गुदड़ी के लाल, अघोरी का मोह, विराम चिन्ह, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, समुद्र संतरण, मधुआ, इंद्रजाल, छोटा जादूगर आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ইয়াত কৈছে যে প্ৰসাদজীয়ে প্ৰায় 70টা গল্প হিন্দীত অংকন কৰিছে। এই কাহিনীসমূহ ছায়া, প্ৰতিধ্বনি, আকাশদ্বীপ আদি, ইন্দ্ৰজাল আদি সংগ্ৰহত সংকলিত কৰিছে। তেখেতৰ প্ৰথম কাহিনী গ্ৰাম 1911 চনত উৰ্দু নামৰ পত্ৰিকাত প্ৰকাশিত হৈছিল। এজন গল্পকাৰ হিচাপে আপোনাক আৱেগপ্ৰৱণ ধাৰাৰ প্ৰৱৰ্তক বুলি কোৱা হয়। তেখেতৰ অধিকাংশ কাহিনীত চাৰিত্ৰিক উদাৰতা, প্ৰেম, কৰুণা, त्याग, बलिदान, অতীতৰ প্ৰতি মোহেৰে যুক্ত ভাৱমূলক আদৰ্শৰ অভিব্যক্তি হৈছে। তেখেতে নিজে সমসাময়িক সমাজৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থা, নিৰীহতা, অন্যায় আৰু শোষণকো কিছু কাহিনীত চিত্ৰিত কৰিছে। सहयोग, गुदरी के लाल, अघोरी का मोह, विराम चिन्ह, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, समुद्र संतरण, मधुआ, छोटा जादूगर इत्यादि তেখেতৰ প্ৰসিদ্ধ কাহিনী আছিল। अंतिम स्टेंजाटলৈ আহিছো। छोटा जादूगर प्रसाद जी की एक ऐसी मनोरम कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए 13-14 साल के एक लड़के के चरित्र को आदर्शात्मक रूप में उभारा गया है। परिस्थिति की मांग से एक बालक किस प्रकार अपने पांव पर खड़ा हो जाता है, उसका यहाँ हृदयग्राही चित्रण हुआ है। छोटे जादूगर के रूप में प्रस्तुत बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रियाकौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति से पाठक का मन सहज ही द्रवीभूत हो उठता है। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত কোৱা হৈছে যে ছোটা যাদুগৰ প্ৰসাদজীৰ এনেকুৱা এক মনোৰম কাহিনী য'ত আৰ্থিক বিপদাপন্ন আৰু প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি 13-14 বছৰীয়া এজন ল'ৰাৰ চৰিত্ৰক আদৰ্শৱান ৰূপত দাঙি ধৰা হৈছে। পৰিৱেশৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব লগা ল'ৰা এজনে কি ধৰণে নিজৰ ভৰিত থিয় হয় তাৰ এক হৃদয়গ্ৰাহী চিত্ৰ অংকিত কৰা হৈছে। ছোটা যাদুগৰৰ ৰূপত প্ৰস্তুত ল'ৰাজনে সুমধুৰ ব্যৱহাৰ, বুদ্ধিৰ প্ৰখৰতা, ক্ৰিয়াকৌশল আৰু মাতৃভক্তিৰে পাঠকৰ হৃদয় অতি সহজতে জয় কৰিব পাৰিছে। লেখক পৰিচয়ত এইখিনি আছিল। চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।